used to label an energy level. So what this n means, it means principal quantum number, L is orbital quantum number, M is magnetic quantum number, and finally S is spin quantum number. Okay, अगर इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जर्नी को ट्रेस किया जाए तो इस तरह से सबसे पहले रदरफोर्ड ने शुरुआत की थी। रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना कहा था कि एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। लेकिन उसके बाद जब हमने बोहर मॉडल को स्टडी किया तो कुछ स्पेक्ट्रा लाइन जैसा कॉन्सेप्ट समझ आया, और वहां से हमने कहा ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। से फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड या अकॉर्डिंग टू बोहर, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तीसरे वाले शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो हमें लगता था कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर ऑक्यूपाइंग द सेम एनर्जी लेवल, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइंग द सेम एनर्जी लेवल, और दीज 32 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइंग द सेम एनर्जी लेवल। लेकिन जब हमने सब शेल्स को कंसिडर किया, सब शेल्स को स्टडी किया, हमें पता चला कि ऐसा नहीं है। ये 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग द सेम एनर्जी लेवल, बट a concept came here that within shells there are subshells. Okay, so we introduced the concept of subshells, right? Like we have in second shell we have S and P. So we have 2 orbitals S and P, and S and P ये कैसे हमें पता चला कि 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, वो हमें इस क्वांटम नंबर L की वजह से पता चला। उसके बाद ये भी देखा हमने कि इन सब शेल्स में भी ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड दोज ऑर्बिटल्स आर लेबल्ड बाय M. Okay, so an orbital may contain 2 electrons, it always contains 2 electrons with opposite spin, राइट। उसके बाद ये भी देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस एक शेल में प्रेजेंट होते हैं, बोथ हैव डिफरेंट स्पिन्स एक्चुअली। सो अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज दैट कि इफ यू हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस, यू नीड टू स्पेसिफाई ऑल द क्वांटम नंबर्स n, l, m and s. Okay, and there is something which is called as 2n square. What happens if we are going to fill the energy levels, if we are going to fill the electrons around the nucleus in these shells? So first shell contains 2 electrons, and जब किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए जाते हैं तो आफ्टर द 2 इलेक्ट्रॉन शेल क्लोजर ऑकर्स, शेल क्लोज हो जाता है। उसके बाद एक नया शेल स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन 8 और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उसमें, तो ये शेल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। उसके बाद एक और शेल स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो अगर इस चीज का ग्राफ हम प्लॉट करें, हम इस तरह से देख सकते हैं कि पहले क्या होता है, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी, चलिए आयोनाइजेशन एनर्जी को देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है या वो डिक्रीज होती है, व्हाट एवर हैपेंस टू दैट, जो भी होता है। लेकिन जब हमारे पास एक ऐसा एटम आ जाता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब मतलब वहां पे शेल क्लोजर हो गया है, फॉर एग्जांपल हीलियम में शेल क्लोजर हो गया है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन इसकी बढ़ जाती है। मींस यू हैव टू सप्लाई लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू टेक एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दिस हीलियम। एंड सेम थिंग हैपेंस जब हम नियॉन के बारे में देखते हैं, तो नियॉन में हम पाते हैं कि शेल क्लोजर हो गया है एट 8, सेकंड शेल इज फिल्ड, तो क्या देखा जाता है कि अचानक से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड सिमिलरली एट 18 ऑल्सो आप देख सकते हैं उसमें आर्गॉन के अंदर, आर्गॉन में जब शेल क्लोजर हो जाता है तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट अब्रप्टली इंक्रीजेस। सो वी कैन से दैट दिस आयोनाइजेशन एनर्जी, इफ वी प्लॉट आयोनाइजेशन एनर्जी हियर and versus some atomic number here, so we will see that there are some peaks obtained. Okay, rest of the things are normal, but there are some peaks which are obtained. Okay, these peaks are obtained at atomic number 2, then at atomic number, right, 10. Neon has atomic number 10, then at atomic number 18, and then at atomic number 36, whatever. So ionization energy abrupt increase हो जाती है इन पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक जेन्युइन रीजन दिया जाता है कि भाई शेल क्लोजर हो रहा है, शेल क्लोजर होने से क्या हो रहा है, शेल स्टेबल हो रहा है। सो अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सको। सिमिलरली इट्स नॉट ओनली आयोनाइजेशन एनर्जी विच शोज abrupt change at these numbers. There are other properties also जो कि इस तरह से अचानक से बढ़ जाती हैं इन एटॉमिक नंबर्स, ये एटॉमिक नंबर्स जब आ जाते हैं तो। सो वही से कि अगर हम ऐसी ही एनालिसिस न्यूक्लियस के लिए करें,
बिल्कुल इसी तरह की एनालिसिस कोई न्यूक्लियस के लिए परफॉर्म की जाए. लेट मी रिप्रेजेंट यू सम डेटा हियर. Yesterday we studied a model which is called as a liquid drop model. Okay, we studied a model called as liquid drop model, and in that model we assumed कि जो nucleus होता है it is somehow equal to a लिक्विड ड्रॉप. जिस तरह से लिक्विड ड्रॉप में ये चीजें होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस भी जो है बिल्कुल इसी तरह का एक हमने कहा एक लिक्विड ड्रॉप की तरह होता है. सो देयर आर वेरियस फोर्सेस जो कि इस ड्रॉप के अंदर प्रेजेंट होते हैं. फिर हमने देखा कि वो फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक वी हैव कूलम्बिक रिपल्शन, एसिमेट्रिक टर्म्स और सम अदर टर्म्स. देयर आर almost 5 terms, but I would like to discuss about last term, which represents actually distribution. Okay, the last term says that how how nucleons are distributed inside the nucleus. It says that if you view nucleus, you will see there are energy levels. Okay, the last term in this semi empirical formula कि अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे देयर आर लेवल्स लाइक दिस, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इन लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी न्यूक्लियॉन्स होते हैं. अब ये जो न्यूक्लियॉन्स इनमें होते हैं ना, यू हैव टू चेक that how these nucleons are there. If they are paired, then the contribution from last of the term is 0, and if they are unpaired, there will be some contribution. Okay, so liquid drop model was somehow considering the effects of shells in nucleus. It was somehow talking about shells, how the shells are present inside the nucleus, but it was not a complete description in fact. Okay, so if we calculate binding energy per nucleon, okay, if we are going to calculate the binding energy per nucleon, but we will calculate it using semi-empirical formula. Okay, using semi-empirical formula, that liquid drop model. And if we calculate the same binding energy per nucleon, but experimentally, okay, we are doing it in two ways. पहले तो हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर रहे हैं सेमी एम्पिरिकल फार्मूला से, और उसके बाद हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर रहे हैं कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली. ओके, इफ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाज करेक्ट, if the liquid drop model would be correct, अगर liquid drop model 100% करेक्ट होता तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आता है? 0. इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है 0. सेमी इंपेरिकल फार्मूला वाला रिजल्ट और ये जो रिजल्ट है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, दीज शुड मैच, देयर शुड बी नो डिफरेंस. लेकिन जब हमने इस चीज को देखा तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नॉन जीरो. वो जीरो नहीं है, वो नॉन जीरो है. ठीक है कि नहीं? अब इसके रीजन क्या दिया गया कि इन दोनों चीजों में फर्क किस चीज का है, क्यों ये वेरिएशन आ रही है? तो बोला गया कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स को सही से कंसिडर नहीं किया था. ठीक है, वहां पे बड़ी एक ल्यूसिड अप्रोक्सीमेशन ली गई थी कि जस्ट वहां पे लेवल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इस तरह से लेवल्स होते हैं कुछ ऐसे. ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट लिया गया था, वहां पर इस न्यूक्लियॉन डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर नहीं किया गया था. सो देयरफॉर ये डिफरेंस यहाँ पर आ रही है. ओके, if we plot this difference, whatever is the difference, अगर ये difference plot करेंगे with respect to the mass number, अगर इस difference को plot किया जाए with respect to mass number, okay, so what we are observing that this difference becomes maximum at certain points. difference बहुत ज्यादा आ रही है कुछ points पर, कुछ points ऐसे हैं जहां पर difference बहुत ज्यादा आ रही है, this difference. okay, now the question arises why, किन points पर difference ज्यादा आ रही है और ऐसा क्यों हो रहा है? okay, the graph was something like this. राइट, अब देखो सबसे पहले डिफरेंस देखी गई n इज इक्वल टू 28 पर. उस न्यूक्लियस के अंदर देखा गया कि ये डिफरेंस काफी ज्यादा है. n इज इक्वल टू 28 में देखा गया कि दिस डिफरेंस इज क्वाइट लार्ज. सिमिलरली देखा गया n इज इक्वल टू 50 के लिए, ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर 50 इलेक्ट्रॉन 50 न्यूक्लियॉन्स है, उसमें ये डिफरेंस ज्यादा आ रही है. ठीक है, सिमिलरली देखा गया n इज इक्वल टू 82 वाले में ये डिफरेंस ज्यादा आ रही है, या इसी तरह से 126 और हाँ 126 के लिए ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रही है. ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? लाइक जैसे हमने वहां पे कहा कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी एब्रप्टली इसलिए इंक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग कह रहे हैं कि शेल क्लोजर हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी क्यों अचानक से ज्यादा हो रही है? व्हाट इज द रीजन? शायद मुझे लगता है शायद इन पॉइंट्स पर न्यूक्लियस के अंदर शायद स्टेबिलिटी काफी ज्यादा आ जाती है. ठीक है, न्यूक्लियस बिकम्स एब्रप्टली स्टेबल, तो इसीलिए इन पॉइंट्स पर बाइंडिंग एनर्जी
मैक्सिमम हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी डिविएशन मैक्सिमम हो जाता है, या मैं यूं कहूं कि इन पॉइंट्स पर शेल क्लोजर होता है. ओके, दिस विल बी द एप्रोप्रिएट टर्म कि इन पॉइंट्स पर शायद शेल क्लोजर हो रहा है. एट n इज इक्वल टू 20 शेल क्लोजर इज हैपनिंग, एट n इज इक्वल टू 50 शेल क्लोजर इज हैपनिंग. लाइकवाइज जैसे कि इलेक्ट्रॉन के मामले में होता था 2 पे, 8 पे, या इस तरह से 18 पर शेल क्लोजर हो रहा था. ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी शेल क्लोजर्स हो रहे हैं. ठीक है, these numbers 2, 8, 18 are called as magic numbers, right? In atomic physics they are called as magic numbers. So here we will also call them as magic numbers. So 28, 50, 82 and 26 they are magic numbers. इन जगह पर शायद न्यूक्लियस के अंदर शेल क्लोजर हो रहा है और इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी डिविएशन यहाँ पे हो रही है, इट इज बिकमिंग मैक्सिमम, एब्रप्टली इट्स बिकमिंग मैक्सिमम एट दीज पॉइंट्स, बाकी किसी पॉइंट्स पर नहीं है. ठीक है, तो ओके, नाउ वी हैव अनदर थिंग आल्सो. एक और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है हमारे पास, वो ये कि अगर हम डेल्टा आर देखेंगे, डेल्टा आर, नाउ लेट मी से व्हाट इज डेल्टा आर. Delta R is like this. Say if we have a nucleus and this nucleus contains n neutrons, okay, it's my n neutrons. If I add 2 more neutrons to it, what will happen? The neutron number will raise and it will become n plus 2. The neutron number will increase. So what will happen? The radius will also increase. अगर पहले वाले न्यूक्लियस की रेडियस r1 थी तो इस वाले रेडियस की न्यूक्लियस r2 हो जाएगी, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक द डेल्टा r. Delta r is the difference. Okay, let us say delta r is r2 minus r1. So r2 minus r1 is what is change in the radius when we are increasing the this neutron number. When we are increasing the neutron number from n to n plus 2, what is change in radius? Okay, let's measure this delta r, right? Okay, we will measure this delta r in two ways. जैसे पहले किया था. Okay, let me measure the delta r here, but using our formula, whatever formula is there, this is the formula, r is equal to r naught a raised power 1 by 3. This one is here. So using this formula we can just calculate what is the change in radius. Okay, let me measure it, right? We'll measure it. This is our measured value m, and let us do this experimentally. Okay, we'll also predict this delta r experimentally. तो दो वेज में हमने इसको किया, एक तो हमने इसको मेजर किया फॉर्मूला से और दूसरा हमने किया इसको मेजर एक्सपेरिमेंटली. आई एम टेकिंग द रेशो. अगर ये दोनों बराबर होंगे तो रेशो 1 आएगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो रेशो 1 नहीं आएगा. ठीक है, ओके, हियर वी आर अगेन सीइंग, हम यहाँ पे फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये रेशो कभी भी 1 नहीं आ रहा है. ठीक है, इट्स नॉट 1. सो इट मीन्स दैट कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया वैल्यू और जो आपने फार्मूला से मेजर किया वैल्यू, उसमें दोनों में वेरिएशन है, डिफरेंस है. अब इस ग्राफ की तरफ देखें, इस ग्राफ को हम ऑब्जर्व करें तो लेट मी प्लॉट दिस डिफरेंस विद मास नंबर. ओके, यहाँ पर भी मुझे कुछ पीक्स नजर आते हैं. आई एम एबल टू सी सम ऑफ द पीक्स हियर एंड दोज पीक्स आर ऑकरिंग एट दीज पॉइंट्स. ओके, दिस वाज द ग्राफ एंड जो पीक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो पीक्स इन पॉइंट्स पर आ रहे हैं. मास नंबर एट न्यूट्रॉन नंबर 20, न्यूट्रॉन नंबर 28 and then neutron number 50, then a peak is observed here, neutron 126, and another peak, okay, 82, like last, here we have 82. Let me write it, 82 here, 82, and then last peak at 126. Okay, so आप देख लीजिए ये जो रेडियस है ना, it is again increasing, but at what points it is increasing? When neutron number becomes 20, 26, this 50, 82, 126, at these points again this ratio is increasing. So this suggests again that there is some presence of shells, there are some shell closures at these points. ठीक है, हो सकता है जब 20 न्यूक्लियर नंबर आ रहा हो, 20 न्यूट्रॉन नंबर आ रहा हो तो शेल क्लोज हो रहा हो, और जैसे ही शेल क्लोज हुआ आप और एक न्यूक्लियन ऐड करोगे तो ऑब्वियसली a new shell is required, and उस न्यू शेल की वजह से जो है ना ये रेडियस बढ़ रही है. ठीक है, सिमिलर थिंग इज हैपनिंग एट दिस 50. जब आपने 50 न्यूट्रॉन्स फिल अप किए तो शेल क्लोजर हो गया. अब एक और न्यूक्लियन फिल करोगे तो नेक्स्ट शेल लाने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से ये रेडियस बढ़ जाएगी. Again, this experiment clearly predicts that there is some presence of shells, there are some shells, and there is some closure at these points. Okay, so let's move ahead. Now we have another thing which is called as isotone. Isotones. We have isotones. Now, what do we mean by isotones? Isotones are those species where Z is fixed. Okay, fixed Z. Those nucleuses where Z is fixed means we have fixed proton number.
atomic number is fixed again, but mass neutron number changes. Okay, there is neutron number which is changing, right? Say for example, if I am considering Z is equal to 26, okay, let us say, assume Z is equal to 26. This is a nucleus. Okay, this one is the nucleus. It has 26 protons. Okay, if you add one more neutron to it, one more neutron, what will happen? It will be like this. Z is again 26, but neutrons are not सेम एज दैट ऑफ बिफोर. न्यूट्रॉन इसमें आ गया ज्यादा, है ना? अगर आप एक और न्यूट्रॉन ऐड करोगे, व्हाट विल हैपन? Z तो 26 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक और स्पीशी बन जाएगी, एक और चीज बन जाएगा, एक और न्यूक्लियस बन जाएगा. ओके, सो वी कॉल दीज एज आइसोटोनस. दे आर कॉल्ड एज आइसोटोनस. सो आइसोटोनस आर दोज स्पीशीज वेयर एटॉमिक नंबर रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, Z is fixed, but anyway we are changing the neutrons, we are adding neutrons or we are removing neutrons, right? बट लेट मी से वन थिंग, अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हैं या न्यूट्रॉन हम लोग कम कर रहे हैं, वहां पे नए नए न्यूक्लियस बनेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियस स्टेबल होंगे, राइट? दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो जो न्यूक्लियस वहां पे बनेंगे वो स्टेबल होंगे. Okay, say for example a nucleus with atomic number 26 and say for example it has protons almost 56. Okay, let's assume it has neutrons 56. ओके okay, इसमें 57 आ गए, आपने एक और न्यूट्रॉन ऐड कर दिया, अब इसमें 57 आ गए, ठीक है. एक और आपने ऐड कर दिया, इसमें 58 आ गए, राइट? लेकिन ये जो न्यूक्लियस बने, ये दो नए न्यूक्लियस जो बने, जरूरी नहीं है कि ये स्टेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है. यू कैन फिक्स द Z and then add number of neutrons to it and see whether the nucleuses which are formed, nuclei which are formed are stable or not. Okay, you can count them. Okay, let's then count. We have a graph which is like this way. Here on this axis, let me plot some number of stable nuclei, number of stable isotones. Okay, let me say number of stable isotones. किसी भी एटम के लिए हमने आइसोटोन्स बनाए और आइसोटोन्स को हमने इस वाई एक्सिस के ऊपर काउंट कर दिया कि कितने आइसोटोन्स हैं हमारे पास, ठीक है. और यहां से हम देख रहे हैं मास नंबर. ओके, अगेन हियर कम्स द ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस, बट इस ग्राफ में क्या हो रहा है? देयर आर सम सर्टेन पीक्स अगेन ऑब्जर्व्ड. Okay, there are certain peaks are there, और ये peaks अगर आप देखोगे ना, it is an astonishing fact that these peaks occur at n is equal to 28, these occur at n is equal to 50, these occur at n is equal to 82 and n is equal to 126. Okay, what does this mean? It means कि वो न्यूक्लियस जिसका ये जो है ना 28 होगा, that is the most stable one. Okay, number of isotones are mostly stable when this nucleus has neutron number 28. Similarly this 50, 82 and 126. Okay, this thing suggests us that again the same result, that there are some shells. Okay, there are some shells. Okay, finally we have a curve, last curve, and that is like this way. This is the most strong evidence जो मैं अब बोल रहा हूँ. This is the most strong evidence जो shell theory में सबसे important evidence है. Let us draw that graph. It's now important graph. We'll be drawing it. Let us consider this graph. Okay, here on this axis I have this absorption coefficient, or we can say absorption cross section. Absorption cross section, right? इस एक्सिस पे मैंने absorption cross section कंसिडर किया, और इस वाली एक्सिस पे मैं कर रहा हूँ कंसिडर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब जरा अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? से पहले मैं एब्जॉर्प्शन ये जो है क्रॉस सेक्शन, इसके बारे में एक लाइन मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ओके, एंड यू आर थ्रोइंग सम न्यूट्रॉन ऑन इट. आपने कोई न्यूट्रॉन इसके ऊपर फेंक दिया है, न्यूक्लियस है एंड यू आर थ्रोइंग सम न्यूट्रॉन. ओके, दिस न्यूक्लियन ट्रैवल्स टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस. ओके, सो व्हाट हैपेंस देन, दिस न्यूक्लियस जब ये इस न्यूक्लियस के साथ टकराएगा, इट मे गेट एब्जॉर्ब्ड. ओके, न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब इट. ओके, न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब इट. नाउ हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी that this neutron will get absorbed? That is called as absorbed cross section. So absorbed cross section represents nothing but it represents simply the probability that a neutron which is thrown on some nucleus will get absorbed. Okay, it has been seen that this absorption coefficient means this probability becomes minimum. It becomes least when we have a nucleus with neutron number 20. Okay, 20, right? If we have a nucleus with neutron number 28,
ये प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है. मींस न्यूट्रॉन नंबर 28 जब होगा, you will throw a neutron on the nucleus, but the nucleus will not easily absorb it. It will not absorb it. Okay. Similarly, when n becomes 50, तो एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें 50 न्यूट्रॉन्स होंगे, यू विल थ्रो सम न्यूट्रॉन ऑन इट, बट इट विल नॉट एक्सेप्ट इट, इट विल नॉट एब्जॉर्ब इट. नाउ अगर आप लोग सोचोगे, कोई और सोचेगा कि ये क्यों हो रहा है, कोई एक सिंपल आंसर दे सकते हैं कि शायद जब n28 है, जब n28 है, तो मतलब न्यूट्रॉन नंबर 28 है, मतलब न्यूक्लियस हैज बिकम द मोस्ट स्टेबल. अब अगर ये एक और न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता तो ये अनस्टेबल नहीं हो जाता. एंड कोई भी स्पीशीज दुनिया में अनस्टेबल क्यों होना चाहेगी, है ना. जब न्यूट्रॉन नंबर 28 है तो मींस न्यूक्लियस इज नाउ स्टेबल. नाउ यू विल थ्रो सम न्यूट्रॉन ऑन इट, बट इट विल नॉट एक्सेप्ट. Why it will not absorb? Because it will disturb its stability if it absorbs it. Okay, so we have seen that this graph looks like this, and the probability meanly distributes. Probability decreases at these points, n28, n50, and n82, and n126. Okay, I think these 4 experimental evidences are quite enough to prove that, to suggest that there are shells inside the nucleus. Okay, these 4 evidences are quite enough, right? So now, अच्छा चलिए ठीक है, अब आ गया समझ कि नहीं शेल्स हैं, काफी एविडेंसेस है हमारे पास कि शेल्स वगैरह होते हैं. किन नंबर्स पे? जब न्यूट्रॉन नंबर 28 होता है, शेल क्लोजर हैपनेस. जब 50 होता है, शेल क्लोजर हैपनेस. जब 82 होता है, शेल क्लोजर हैपनेस. जब 126 होता है तो शेल क्लोजर हैपनेस. एनीवेज, these numbers are called as magic numbers. They are called as magic numbers, right? Now, तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम न्यूक्लियर प्रॉब्लम को भी बिल्कुल उसी तरह से अप्रोच करें जिस तरह से हमने एटॉमिक फिजिक्स में अप्रोच किया था. जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, जैसे हमने ये पता किया था, श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व की थी, और श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद पता लगाया था कि नंबर ऑफ शेल्स कैसे हैं वहां पे. ठीक है, तो हम यहाँ भी वही करते हैं. क्यों ना श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व की जाए न्यूक्लियस के पोटेंशियल के लिए. लेकिन यहाँ पर एक मसला क्रिएट हो जाता है, वो ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हो तो न्यूक्लियस का पोटेंशियल होता है, न्यूक्लियस का पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं तो न्यूक्लियस का पोटेंशियल है. लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर खुद आप न्यूक्लियस को ही कंसिडर कर रहे हो, है ना. तो जब आप न्यूक्लियस को कंसिडर करोगे, उसका जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी क्रिएटेड बाय द न्यूक्लियॉन्स इटसेल्फ. वो पोटेंशियल खुद ब खुद न्यूक्लियॉन्स ही कंसिडर क्रिएट करेंगे. तो ये न्यूक्लियॉन जो है ना, ये मूव करेंगे इन द पोटेंशियल व्हिच इज क्रिएटेड बाय देमसेल्व्स. The problem is quite different from structure of atom problem, right? There was nucleus which was creating some potential, but here what we have nucleons which are creating their own potential, and then they are moving in same potential. Okay, now we can take simply एक assumption यहाँ पे मार सकते हैं. वो ये क्या है कि आप हर किसी न्यूक्लियन का पोटेंशियल क्रिएट करो. Treat every nucleon as a point particle and then calculate its potential. Okay, calculate its potential, then sum that potential. You can sum up that potential. सारे potentials को sum करो, जितने भी न्यूक्लियॉन्स है सबका potential निकाल के sum करो. Then divide it by number of nucleons which are there. So this will be the average potential. This will be the average potential which will be faced by each neutron. सबका सम डिवाइड बाय n, तो ये एवरेज पोटेंशियल होगा जो हर कोई न्यूक्लियन फेस करेगा. ओके, दिस वन इज द बेस्ट थिंग, वी कैन ट्राई इट, राइट. दिस इज कॉल्ड एज एवरेज पोटेंशियल थ्योरम. एवरेज पोटेंशियल थ्योरम, वी कैन से दैट एवरी न्यूक्लियन फेसेस एवरेज पोटेंशियल, राइट. द एवरेज पोटेंशियल इज फेस्ड बाय देम. ओके, now next thing, now the question arises that ये जो potential यहाँ पे हम लोग लेंगे, इसकी form क्या होगी? Will it be an infinite square potential? Well, will it be a harmonic potential, or will it be a wood section potential, or what type of potential is this? Okay, because we have so many forms of potentials. Right away we have so many forms of potentials, so it is quite difficult to predict which potential we will take. Okay, so let me just help here that किस तरह का potential जो है वो हम यहाँ पे consider कर सकते हैं. Okay, let us say अगर inside the nucleus mass distribution देखा जाए, mass distribution, if I consider mass distribution inside the nucleus, so what I will see that यहाँ पे जो है wood section formula से पता चलता है कि mass distribution जो है वो तो uniform ही है, that's uniform. Mass distribution is throughout uniform, लेकिन it is sharply decreasing at the boundaries. कुछ इस तरह से है. ठीक है, जब न्यूक्लियस की बाउंड्रीज पर चले जाते हैं तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियंस का एब्रप्टली जीरो हो जाता है इस पॉइंट पे. ठीक है, ओके, इस पॉइंट पर. सो मींस थ्रू आउट ये यूनिफॉर्म है, लेकिन जब भी हम यहाँ पे जाते हैं, बाउंड्रीज पर आते हैं तो इट डिक्रीजेस. ओके, वी कैन से दैट इट हैज शार्प बाउंड्रीज. ओके, दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन हैज शार्प बाउंड्रीज. ओके, लेट मी मेक एन assumption then. If
mass distribution is behaving like this, I will assume that potential also behaves like this. कि potential की भी sharp boundaries है, potential का भी sharp boundaries है, ये मैं assume करूँगा. It's an assumption and let us see ये work करता है या नहीं करता है. That's an important thing. Okay, assumption करना तो easy है, but it should work out with what we call as the experimental observations then. Okay, let us say. So आप कहोगे कि एक ऐसा potential चाहिए जो constant हो, थ्रू आउट द ये न्यूक्लियस कांस्टेंट रहे और उसके बाद अचानक से डिक्रीज होके जीरो बन जाए. ओके, all of us know that there is only one type of potential which is that is infinite square potential well. Okay, infinite square potential well is like this, that is uniform and then it decreases. Okay, infinite square potential, इस पोटेंशियल को एज्यूम करते हैं. ओके, तो हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, सिंपल. अब करना है क्या है, करना कुछ खास नहीं है, बस श्रोडिंगर इक्वेशन ले ली जाए, h cut square by 2m. Okay, consider this Schrodinger equation, then d2u by dx square, then plus, okay, here we will say potential v of x and we know that is potential का हमने फॉर्म लिया है infinite square potential well, plus there is an orbital contribution centrifugal term here, that's L into L plus 1 divided by 2mr square, it's 2mr square, then we have u, this will be equivalent to eu. Okay, then what is the procedure? The procedure is quite simple. What we are going to do, we are going to do one thing, substitute here v के लिए हम यहाँ पे substitute करेंगे infinite square well का potential. Okay, let me say what is that, it is 0 and it is infinite. Okay, for r less than r naught it is 0 and for some r which is greater than r naught it is infinite. Okay, diagrammatically we can show that thing. Okay, this like this way. Okay, we have this thing. Okay, this one is our potential. I think here we are going to take v, the potential, and on this side we are going to take the r. Okay, this is there, right? So if we are going to do that, it will be something like that. Okay, sorry, it is like this. Okay, sorry, let me try it once again. It's like this. Okay, we'll try it simply. It's like this something. So we have a potential well, right? We have a potential well. Here we are having v potential and here we are having this radius r. Let us say this is the point r naught. So यहाँ पर इस पॉइंट तक तो पोटेंशियल क्या है हमारा 0 है और इस पॉइंट के बाहर क्या है इनफाइनाइट है. मीन्स कि अगर हम एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे यहाँ पे इस पोटेंशियल वेल के अंदर, तो ये इस पोटेंशियल वेल से एस्केप नहीं कर सकता. इट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द पोटेंशियल वेल बिकॉज बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए इनफाइनाइट पोटेंशियल की जरूरत है. इट कैन नॉट क्रॉस दैट, राइट. We can, if we say ये जो प्रॉब्लम है, it is simple. Just imagine we have a child जो कि एक वेल के अंदर गिर गया है, वो वेल के अंदर है. Now the child cannot itself cross over the well because it requires infinite energy for him to cross the well. So it will never be able to come out, right? So this is a potential for the nucleus. Okay, somebody may argue कि this is not a realistic situation. ये जो आप ले रहे हो ये realistic situation नहीं है, ठीक है. somebody में argue, वो कोई इस तरह से आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस एक पोटेंशियल वेल है और इस पोटेंशियल वेल से बाहर निकलने के लिए इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि नहीं होता है. हम फाइनाइट एनर्जी सप्लाई करते हैं और जो न्यूक्लियन होता है वो न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर आ जाता है. सो ये जो एजम्पशन आप ले रहे हो यहाँ पे, इट इज नॉट मैचिंग विद द रियलिस्टिक सिचुएशन. सो it's simple. I know that it doesn't match with realistic situation, but somehow as per this rule it's workable. Okay, we can just work with it and then see where are the fallacies, right? So let's work out this. So we need to solve this Schrodinger equation. बस ये Schrodinger equation solve करो. जैसे आप ये Schrodinger equation solve करोगे, you will be easily able to find out the energy levels. Okay, तो ये तो हमने solve किया है. I'm not going to solve this once again. What I am going to do is I am going to write its solution, right? सीधा मैं इसका solution लिखूंगा. We know that. So what is the solution of this type of equation? We know the solution is given by a famous equation, that's Bessel equation. Okay, we are here, u is nothing,
but it is a Bessel equation. Okay, R J J K times R. We have a Bessel equation like this. This is the solution to this equation. Okay, but if it is a solution, it should satisfy the boundary condition. Okay, means that मैं कह रहा हूँ at R is equal to R naught, या at R is equal to R naught, this wave function should vanish. Why this should vanish? क्योंकि अगर ये vanish नहीं हुई ना, तो particle will be able to escape from the shell, which is not possible. Okay, so at the boundaries this function should obviously vanish. So we can say that J K of R naught should become 0 at the boundaries. Okay, this is the thing. Okay, अब इस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, इस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई किया जाए? ओके, इसको सेटिस्फाई करने का एक सिंपल तरीका है, this the solution to this equation J of K R naught is equal to 0. इस इक्वेशन का सोल्यूशन कोई एक पॉइंट नहीं है. पहली तो बात आप याद रखिए कि कोई एक पॉइंट नहीं है इसका सोल्यूशन, बल्कि इसका सोल्यूशन है कर्व्स, फैमिलीज ऑफ कर्व्स. देयर आर सो मेनी कर्व्स व्हिच आर द सॉल्यूशंस. ओके, एंड एट दोज कर्व्स, उन कर्व्स पर पॉइंट्स हैं जहां पर ये J K R 0 होता है, जहां पर ये 0 होता है. ओके, सो देयर आर सो मेनी कर्व्स, there are so many curves, and on those curves there are points where this function vanishes. Okay, so iska jo solution hai, that is somehow complex, somehow that's complex. Okay, let's write the solution. Okay, ab inka solution jab aap dekhoge na, solve karoge, to what you will see, I think the meeting will end. Okay, we can join on the same link. If it ends, it will surely end in few seconds, I think. So there are energy levels, right? And we can label those energy levels. Just say we have L is equal to 0. Let us say L is equal to 0 represents this first curve, and इस curve पर ये point है 0, 1, 2, 3. Okay, let me write then for them. N is equal to 0, N is equal to 1, N is equal to 2, N is equal to 3, N is equal to 4, and so forth, right? Similarly, we have L is equal to 1. L is equal to 1 represent a second thing. And similarly, N is equal to 0, 1, 2, 3, 4, this will work. And N is equal to 2, third curve, and then fourth curve. Okay, so these are the energy levels जो कि